As I discussed you, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया पहले शुरू के में, what is the artificial intelligence? You create some artificial type of the intelligence with the help of computer. You ask the computer to do something particular steps. For those steps, if you feed into the computer, you create the model you can use in your business. This is called business intelligence. So in business intelligence, what happens? You query. Then in data science, we say querying the past, present, and future. Then you combine the data and you create a model. And model is also based on what is your need, what you would like to convey to the society. जो मॉडल आप बनाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप बिजनेस पे चलकर करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए विक्रांत यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर लोगों को लेना चाहती है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो उसको मॉडल बनाने का हम डाटा सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ तो 100, 200, 400, 1000 की बात है। अगर लार्ज सभी को कंबाइन किया जाए, मान लीजिए सभी यूनिवर्सिटी को एक साथ कंबाइन किया जाए, एक प्रायोरिटी बनाई जाए, तो उसके लिए हमको जो है वो पूरा एक इंटेलिजेंस बनाना है, बिजनेस इंटेलिजेंस बनाना है। तो वी नीड टू क्रिएट ए प्रोसेस मॉडल एंड देन यूज पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिकल टूल्स। ऑल दोज टुगेदर ये सब मिला के हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस का निर्माण करेंगे। Now there are many ways you can understand the use of data, and in games also, and also so many companies use it in an analytical process. This is also a part of the data science. Now this is another example of data science. Google spell checker. You understand spell checker? How is spelling checked by Google? This is part of data science. And also translation. Okay. This is data science. Because English dictionary, sometimes one particular English meaning has so many different. So it asks you is German English or German or English or different language. If you're English, then ask you British, UK, Australia or US English. So all those models are created and they are already installed within the system. Amazon.com, oh great things becoming nowadays. You learn about Amazon, very big company, how data are managed, how models are created. If you look at all details of the history of the Amazon.com, for example, saturated fat is not bad for you after all, because data is saturated. Don't think that the saturation of data is not useful. Of course, it is useful. And Microsoft predictive analysis for traffic from 2005, if you look at Google, how they manage the data, how they created the models, and how they applied the artificial intelligence on data. This is one of the great examples. Now, you know the web X series. This X series is this little technical part that here we call connection between people and connection between the information. We are using different PCs, usernet, different types of the protocols. I'm talking about computer science, all this. And we are different programming languages. As time goes on, we have Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई और जैसे जैसे हमने जो है वो हमारे बिजनेस इंक्रीज हुए हैं, तो उसके साथ हमारे डाटा मॉडल्स भी बड़े बड़े बनाने पड़े। उसके लिए हमको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ा। तो वेब के टूल भी सारे जो हैं वो अपग्रेड होते जा रहे हैं। Now, another component you understand about what is the data, what is the data science, what are the data models, what is the data process, and what could be done in the data science. Here we understand what is the data science process, not process, data science process. Data science process means what happens in data science project now. Project is a combination of some. You know, understand what is project? जैसे आप अपनी एक डिग्री कर रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। आप कोई एक कोर्स करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट में कितने डाटा की जरूरत है, तो वो सारी जितनी भी उस पर प्रोसेस हो रही है, पहले तो आप समझिए कि कौन सी प्रोसेस है।
एक क्विक वर्क थ्रू स्टेप ऑल इसके इलस्ट्रेशन है सारे, आप देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं और उसकी क्या वैल्यू चेन है, एक के बाद दूसरा कौन आएगा और उसके बारे में मॉडल पैदा कीजिए, फिर प्रोसेस पैदा कीजिए। तो ये सारे जो स्टेप्स है। नाउ फर्स्ट फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एनी प्रोजेक्ट यू डू द सिमिलर वे यू डू इन डाटा साइंस। फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, collecting the raw data for the problem, processing the data to analyze, exploring the data। आप समझते हैं एक्सप्लोरिंग, आप वो एक्सप्लोर करें जो आपके लिए यूजफुल है, वो पाएं। परफॉर्मिंग इन डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस में आप पाएंगे कि वाकई अगर दो डाटा यूजफुल है तो विच इज मोर यूजफुल, एंड कम्यूटेटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस, इसके बाद इस एनालिसिस का जो रिजल्ट आएगा, देन यू find a particular kind of the process useful for your particular kind of the data science project. Another question is come management, and this is very important part. India lacks in management, and this is a very serious question. I attended so many international conferences. Main lack was the common thing comes from all scientists around the world that India lacks management as compared to other developed countries. But I give you a little story about that. What is management? In 1967, Europe built a big satellite. Europe, you know, Europe, so many countries all together. Europe built a big satellite, worth 2.5 billion euro. इसकी कीमत कितनी थी? 2.5 बिलियन यूरो। और उसमें उन्होंने क्या किया कि इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने यूरोप के करीब 14-15 देशों की हेल्प ली और 14-15, और वो प्रोजेक्ट को उन्होंने डिवाइड किया सबको कि ये पार्ट इस कंट्री का, इस पार्ट ये कंट्री का, ये कंट्री का। और जब वो प्रोजेक्ट पूरे हो गए तो उन्होंने सब उसको यूनाइट किया, एक किया, और उसके बाद वो सारा कंप्यूटर सिस्टम जो उसमें मॉडल्स और प्रोसेस क्रिएट की गई थी उसमें सेट किया सैटेलाइट में। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि वो सैटेलाइट 1 मिनट के ऊपर नहीं चला और वो समुद्र में आके गिर गया, fell into the sea. It was great loss to, like 2.5 billion euro loss, first loss to European countries. अब यही कुछ बैठा है कि सारी खोज हुई उस पर कि ये क्या हुआ। जैसे हमारे यहाँ कमेटियाँ बैठती है, वो साइंटिस्ट बैठे हैं अलग कंट्री में और सभी ने कहा कि हमारा सही था, हमारा सही था, हमारा सही था, हमारा सही था। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं निकली कि मतलब किसी प्रोग्रामिंग में, किसी की मॉडलिंग में, किसी की डाटा एप्लीकेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो मालूम पड़ा कि फ्रांस और जर्मनी का जब प्रोजेक्ट जुड़ा गया तो जोड़ने में जो प्रोग्रामिंग लाइन यूज हुई थी उसमें एक वर्ड गलत हो गया जोड़ने में, एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट द कंप्यूटर साइंस। दिस इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके बाद में कंप्यूटर साइंस में नई ब्रांच आई, वो है प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट अब कंप्यूटर साइंस का पार्ट है आज, हाउ टू मैनेज ए नॉलेज। तो मैनेजमेंट इज मोर यूजफुल। आपने जो भी किया है, जो भी मशीन बनाई, जो भी मॉडल बनाई, जो भी प्रोसेस की, उसको आपने मैनेज कैसे किया। हमने जैसे आपके चांसेस साहब ने यूनिवर्सिटी खोल दी, बहुत कुछ सब कुछ प्रोवाइड है, लेकिन मैनेजमेंट के बगैर मैनेजमेंट को प्रॉपर करना, डे टू डे एक्टिविटीज, प्रोसेस, उसके क्या मॉडल्स हैं, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं। जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ऑल प्रोफेसर अपॉइंटेड ऑन इट, दैट फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च, गूगल इज अराउंड मोर देन 50 billion, and what is based on search technique, data search, information search, knowledge search. They are nothing, this is data. So based on the data and how data combines and how data perceives you in different ways. So you must understand the value of the data. Now, हेलो ग्रुप था मैसेज चलो जल्दी से और करते हैं। हाँ हाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम
किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए मॉडल बनाना एंड मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट वी गिव द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो गूगल में भी क्या है, गूगल क्रिएटेड देयर ओन मॉडल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, और वो मॉडल सारे गूगल में जो है, जो आपको विजिबल नहीं है, उसके आधार पर आपकी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हाउ डीप थिंकिंग, हाउ प्रिसाइज थिंकिंग ऑफ द गूगल टू बी गिव यू आउट a particular kind of information based on only few words, but based on the priority of the Google also. जैसे मैंने बताया उनकी priority क्या है according to the business. Now there are around 30 billion search requests a month. Now it is increased, I think, more than 33 billion search every month. Perhaps a trillion events of history between search providers. आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे, लॉग में जाएंगे, you will find trillions of these things. How this management could be done? Based on data science, what I have been explaining during last few minutes. हमने डाटा को इंफॉर्मेशन बनाया, इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाया, नॉलेज को फिर नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका बनाया जिसको हम मॉडल कहते हैं, हमने प्रोसेस बनाई, और प्रोसेस के बाद में हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स लिए, देन ट्राई टू कन्विंस द कंप्यूटर क्रिएट टू अंडरस्टैंड इट, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. And then finally, or eventually, we created different kinds of the Google AdWords. उससे आप जो अपनी जो चाहते हैं आप जो है आप सर्च कर सकते हैं. मैं छोटी सी इस बात पर कहूँगा, there is a called scholar.google. It's a software, scientific software, and this software is used nowadays. You find normally the Google also part of Google. And there were these 21 scientists, one from India, he was the chief engineer of this. They created this kind of research. Every scientific activities you can find within scholar.google. Scholar.google.com. You can find all types of information, scientific information, who and where stands in particular area of the science, technology, art, science, humanities, all you can find information based on that. This is nothing. This is based on data science and what I have been explaining you during the last 2 years. Now, if you look at search world, this is your own time, you can look at different companies around the world. दुनिया के अंदर कई तरह कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस से लेके, लोन से लेके, मॉर्गेज से लेके, किस तरीके से जो गूगल में सर्च करती है, और ये कंपनियों ने अपने ऐसे मॉडल बनाए हैं कि इसकी परसेंटेज बताइए यहाँ पर कि कितने लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल बेस्ड ऑफ सर्चिंग डेटा. नाउ देयर आर अदर काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ बेस्ड ऑन डाटा साइंस. फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डाटाबेस. मतलब यह है कि आप जैसे बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, उनमें डाटाबेस है आपकी इंफॉर्मेशन. तो आप फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स पर आप जाते हैं, वो रिकमेंडेड है कि आप पर्टिकुलर सिस्टम में क्या चाहते हैं. आप जैसे फ्रॉड डिटेक्शन है, ये भी इसी से होता है डाटा साइंस. वायरलेस सेंसर डाटा है, होम स्मार्ट होम डाटा है, रियल टाइम monitoring Internet of Things. These all are based on data science. Okay? Because data is everywhere. How to combine, how to extract, how to evaluate, and how to diagnose. This is all based on data, and therefore this is data science. So you can also do, for example, text data, social media data. You can review particular product. For example, consumer satisfaction based on data. You are using Facebook, Twitter, LinkedIn, all these e-discovery, all based on the data. Now you can have software long data, but very interesting thing is that if you go to Google, you search something, your search is saved by the Google. How people search, which way the people search, and of course part people would like to know about that. Every history is there.
But the problem came in United States 10 years before. कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने गूगल से कहा कि हमारा सारा हेल्थ डाटा आप दो, गवर्नमेंट कह रही है गूगल से कि आप अपना हेल्थ डाटा मुझे दो, हमको दो। बोले हम कैसे हेल्थ डाटा दें कि आपको मालूम है कि हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम्स है, आपको मालूम है कितनी करके हॉस्पिटल, हमसे ज़्यादा मालूम है और आप उसकी हिस्ट्री आपके पास है। पर आप सरप्राइज होंगे कि गूगल ने उसको रिफ्यूज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गूगल पर मर्जी है, गूगल दे या न दे, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है अपनी हिस्ट्री। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल कि एज आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि हैपनिंग ऑनलाइन आप क्या करते हैं, every data is going into the system and also creating the history. Internet of things, so many things you are doing with the internet every day. Health, scientific computing, user generated web and mobile, all data. आप देखा होगा कि डेटा जो आपको मिलता है उसकी लिमिटेशन है based on the price. And now it means that data is the new oil. This is the world economic forum. आज पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का एक जो बेसिस है वो क्या है, डेटा है। ये जो प्लांट है जो हमारा जो है ये डाटा का, और इसको आप हर प्लांट में क्या क्या चीज़ भरी हुई है, एक लीफ में ऐसी चीज़ें भरी हुई है, पूरा इकोनॉमिक फॉर्म चल रहा है। रिसेंटली चाइना हैड द ऑस्ट्रेलियन इंश्योरेंस डाटा। हैकिंग इज वेरी बैड थिंग, दिस इज अनदर side effects of the computer science, of course. Therefore, hackers are needed in the society every day. Hackers are given huge amount of salary in many countries because the question of their valuation, value of their data. So, again, another point would like to come on this particular, as I discussed big data. Why we talk big data? As I discussed you, we created information from the data. What is information? Again, organized collection of data. Organized collection of information becomes knowledge. And then the knowledge is, when the knowledge is particularly model, created model by computers, we call a particular type of the model. Now, if we have big data, big means billions of data. It is not easy to create the models. So first of all, let us understand few things about big data. So, there are 5 very important part of the big data. Big data refers to data sets that are too large or complex. Now what is the meaning of complex here? Mathematics students understand, complex means the two things are perpendicular. Okay? But general students very difficult to understand. Mathematical logic is little different, but normally we said one is called difficult and another is called complex. Complex means we cannot understand with the human brain. In mathematics we say two things are one complex quantity, one real quantity, because one component of another is zero. Therefore it is called complex. Okay? So here is also there are complex information in the web. This information is called complex because human brain cannot understand billions of data. So how we could process those, how we could create a model through those, this is the part of big data. So data with many fields offer greater statistical power, but data with a higher complexity may lead to a higher fast discovery rate. Therefore we need to create, क्योंकि ज़्यादा डाटा हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, so we need to create appropriate models. And we need to understand what is the qualities of big data. So, again I am going here. Raw data, volume, first is called volume, 5 P's. What is the change over time? समय के साथ कैसे बदलता है? That is called velocity. Data types, variety, data veracity, data quality, and then the information for decision making means value. What is the value of it? These 5 are the part of the data. Unless you know what are the 5 P's for particular type of the data set, we cannot understand the big data.
Now, what can you do with the data? Again, I mentioned traffic prediction again. This is another very great application. Like weather prediction, there are millions and billions of data in weather map, as you see every day. Similarly, traffic, use traffic is there. So you can create a model. Means this particular day, this particular time, how many people are going accordingly, you create how the traffic was going on and how you can resolve based on your model. So this is called traffic prediction, and also earthquake warning also. Again, another, the earthquake again related to the data, particular location, latitude, altitude. Earth is very big and so many complex geographical situations or weather different. These all they are nothing but they are based on this data. And there are few examples. You can look at your own time and about the. Now this is another very great definition about the data science. How data science is created after going through all these activities. For example, you have hacking skill also here. You have machine learning, you have mathematics, statistics, knowledge, and also you have data science. But data science, of course, overlaps with all those things. Yeah. Everywhere is there. But of course, this is being normally we never regard hacking as a part of data science. We don't want to study that. This is very bad thing. Similarly, there are other things. You can add something more with the data science, and you can create a particular type of the model with the help of data science. Now, this is the part where computer scientists understand, or IT people, or normally say what is the database. Collection of information, collection of data is called database. So, what we can create, first of all, for example, we have large number of data. First of all, we can create what is the value of the data, what is the amount of data, and example, there are many examples in societies, and how prioritize particular priority of the data. What kind of structure of the data in computer science, and what are the properties, what are the realizations. If you do not belong to computer science, don't try to understand at this moment. But it does mean that if you know particular type of the application, like SQL, or like another type of the ACID or some particular type of the programming, you can create a better model for data science. आपको समझ में आ रहा नहीं आता ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मैंने हिंदी में भी थोड़ा बोलना शुरू कर दिया